Preet Vijaya here. This seminar has to be attended along with the child, right? Yes and no. If your child is about 10 years of age, highly recommended you attend it with the child. Otherwise, you may or may not. Okay, yeah, thanks. Good morning. Yeah, we are fine. It's me, my husband, Indrajit, and our son, Aditya, who is 14 years old. Hi, Aditya. How are you doing? Come closer. So I'm also a parent like you. I'm not from Parvarish. I'm an ex-student of Parvarish, and I'm also a parent like you. And I think not very long time back, I was also attending the same session like you all. But very excited to have you all here. Thank you so much. Waiting for others to join. Where are you from, Aparna, and how old is Aditya? Yeah, Aditya is 14 years old, and we are based in Nerul, Navi Mumbai, Maharashtra. Hi, Aditya. Hi. Aditya, what brings you here today? His parents. Because it's only in the morning that we happen to tell him that we have a webinar, and you are also invited. So, No, Aditya, you're going to have a very, very good time. Trust me. You should be looking forward to this. You're going to have a very good time. And what have you told, Aparna, what have you told him about the seminar? What is it about? well, I just told him that we are going to learn some fun ways with regards to doing our work, our studies, because the name of the webinar is Fun with Studies. That's what I told him, nothing beyond that. So let's see. No, I think when we start a session, we also, when we came in, we started with the same perspective that we're going to learn some fun ways of studies. But honestly, it's not about learning fun ways of study. It's more about understanding that studies itself is fun. So there is no particular fun way of study. It's just that studies is fun. You start enjoying studies like, it's just another perspective. So I'm just Preet. I'm also a parent like everyone and like all of you. And I've been a part of Parvarish as a parent for a long time, for about 6 months now. And I started my journey with the 2-month program. And like Gitanjali, jaise aapne bola na, the primary objective was to learn. And I started from 2-day NLCP. And I think it brought a big difference, not just as a parent, but I thought that course was it gave us, it is a course on emotional intelligence. वहां से परवरिश के साथ जर्नी शुरू हुई. And after that, I think my parents have also done it. जैसे मैंने आपसे पूछा आप यहाँ पे क्यों हो? My parents have done it. My sister has done. हमारी family में सब लोग ये course कर रहे हैं एक-एक करके. Then also became a part of the Fun with Study program, जिसके लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं. And could not attend the entire program. अभी आप सबके साथ, I think when we start, या जब भी ये वाला next शुरू होगा, तो I'll be attending this program again. But had a very good time, and could get a chance to implement, and कई बहुत pain points थे with my son with learning in certain subjects, and this course really helped. And I wish कि ये course हम सब इसमें से बहुत कुछ सीख पाएं. One person who's going to change his, this entire course. There's a lot of things written about Sushant, but the most important thing I must tell you, he's one who can bring, he will help you change your perspective and bring a paradigm change towards how we understand and how our children understand studies. Sushant comes with a lot of experience. He's a metallurgical, so he's engineer in metallurgy, and then he's had 32 years of experience in different fields. So Sushant has worked with, after doing his MBA, he worked with various organizations, including SAIL, including Credit Capital, Bank of America, then Max Life Insurance. And across various functions like operations, risk management, claims, customer service, handling. And before he started his journey as a coach with Landmark in 2005, and where he also started coaching a lot of people like us, and Landmark, I think many of us would be aware, is a
landmark education. And then in 2008, Sushant formed the Parvarish group. And I think since then, he's been relentlessly working and has taken this his mission of helping parents like us to become the parents, and to also, and of course, a lot of he's authored 2 books, The Perfect Parenting. I think highly recommended that you read this book, and How to Select the Best Boarding Schools. Sorry, Sushant, I haven't read this one. I think abhi bache is age mein nahi aayegi boarding school select kare. He's helped a lot of parents. He's helped over about 2.7 lakh parents across different countries. In fact, my sister from Canada in different time zones, and some of their friends have been attending these programs. He's coached more than 30,000 teachers. And जब भी सुशांत से बात होती है, कभी वो शिलोंग बैठे होते हैं, कभी वो कहीं बैठे होते हैं, कभी कहीं. And I hats off to your Sushant, hats off to you कि आप इतनी जगह जा जाके you are trying to further your mission. He's been a TEDx speaker, and one of his TEDx talks, Failure is Wow. I highly recommend कि हर जना सुने उसको. Failure is Wow. He has multiple TED talks, but that one is mind blowing. He's been a mentor to various schools. He's Sushant, over to you. I think there's thanks Jaspreet, for introducing it, guys. This session is not about me, and thanks Jaspreet for coming in. And as you said, Jaspreet is been with us just about 6 months, but what he's taken on is here मैं जो भी बंदा मिलेगा उसको transform करूँगा. So his parents, by the way. So when I talk to people, I said parents of a 36-year-old person has also done the program. So thanks a lot. So आज ना हम parenting की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं. So let's get clear about everything else. एक second, मैं ना Jaspreet, I'll just take you off the. I think you are still on Spotlight, right? I'm muted. नहीं, you are still on the Spotlight, है ना? हाँ, तो जरा मैं एक बार वो Spotlight हटा दूँ, otherwise people will only look at you. Okay, great. अब better है, ठीक है? So hi guys, thanks for joining in. By the way, as I said, parents of children below 10, or parents can attend, but parents of children above 10 can have children together. So ना बहुत difficult होने वाला है थोड़ा सा ये sessions, because we are talking about studies. We're talking about studies together with parents and children. So अगर एक एलिमेंट पढ़ाई अगर हम अपने पेरेंटिंग की साइड से निकाल दें, तो विल दैट ब्रिंग अ लॉट ऑफ पीस इन द रिलेशनशिप. अगर हमें बच्चों के पीछे ना पड़ना पड़े और बच्चों को पढ़ाई का परेशानी ना होना पड़े, हाउ वुड लाइफ बी? आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ फ्यू पेरेंट्स एंड अ फ्यू चिल्ड्रन कि अगर पढ़ाई जो एक बहुत बड़ा कंटेंशियस इश्यू बन जाता है बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, वो हट जाए, तो हाउ वुड इट बी? So parents and children, both of you can just quickly participate and talk. Just, and by the way, छोटा सा request है. More than half the people do not have their videos on. We don't do that in our online classes. My request is खोल लो यार. And I can tell you, next 1.5 hours is going to be transforming for you. The way आपके बच्चों को छोड़ो, the way you have looked at studies, the way you understand studies, that is going to alter forever. और एक चीज और बता सकता हूं, ये समझने के बाद ना, even as adults, you would want to study today. You would want to say कि यार मेरे को बच्चों के साथ पढ़ाई करनी है, दोबारा से वही मैथ्स और वही साइंस और वही हिस्ट्री और वही सिविक्स जिसको मैं नहीं चाहता था और बहुत बोर होती थी, वो सब एक्चुअली पढ़ना चाहोगे. You will get a sense of it today in the next 1.5 hours. चलेगा? बच्चों को छोड़ो, आपको भी मजा आएगा कि यार मुझे पढ़ना है दोबारा से. अगर ऐसे पढ़ाई होती है तो मुझे पढ़ना है. तो मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, उस एफर्ट के लिए ना वीडियोस ऑन कर लो यार और पार्टिसिपेट करो. ये ना वन साइडेड अफेयर नहीं है कि मैं बोलता रहूं और आप सुनते रहोगे, नहीं होने वाला है. एंड दैट्स द होल प्रॉब्लम विद स्टडीज. व्हेन वी वेंट टू स्टडीज, 90% of the time the teacher was talking and you were just listening, and after 2, 3, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, किसी ना किसी का स्विच ऑफ हो रहा था. स्पेसिफिकली मेरा तो होता था, और मैं खिड़की से बाहर कोई भी चल रहा है, कोई भी जा रहा है, कोई भी हो रहा है, वो देख रहा होता था, टीचर को नहीं सुन रहा होता था. आई थिंक pretty much the same with everyone.
So please switch on your videos, guys. Please, 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 please. Hello. Switch on kar do yaar. Kya ho gaya? I know it's a Sunday, it's not easy, but I think we're here for that time. And my request is please right now spend that time with me. That's it. नहीं open करोगे अभी भी नहीं. Okay. पता है कि जब तक वीडियोस ऑन नहीं होंगी ना हम लर्न ही नहीं कर पाएंगे वो सीखना वीडियो ऑफ है ना वो आज सेशन से कुछ लेके जाने वाला नहीं है. By the way, अभी तो मैं अलाउ कर रहा हूँ कि ठीक है कुछ लोग नहीं कर रहे but when we get into our program I really take people out. I said यार अगर तुमने वीडियोस ऑन नहीं करने और नहीं होना ना पीछे से कुछ और काम करना है वो कर लो यार यहाँ से हटो. Please do not do that and I will take it off. तो अभी तो इतनी अथॉरिटी नहीं है मेरे पास. People are meeting, most of the people are meeting me for the first time. So Shilpa, Pratibha, Ashish, Ruchira, Isha, Neha, please switch it on. Yeah, Keshav, come on. ऐसे मत करो. Okay, so let me, Purva, you have something to say? Your hand is up. आप कुछ बोलना चाह रहे हो? Yes, you had asked about, you raised a question that if you remove the study part between the parenting and, between parents and child, how it would be. So I wanted to answer that age old, it is going to be a happy process, right? If parents don't ask us, or if we don't ask our kids to study, it is going to be a happy process. The parenting is going to be a little bit easier on Just both little the bit. parts. Just little bit, because then basic discipline and other things we have to take care of in any which ways. नहीं उसके लिए मैं अलग से बात कर लूंगा. जसप्रीत से भी बात कर लेना. उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. So a quick question to all of you, including children, okay? And you can keep putting this on the chat. It will be easier if you put it on the chat. Otherwise, just switch it on. So studies के time पे as a parent and children, बच्चों मैं ना कुछ चीजें ऐसी बोलूंगा जो शायद parents कर रहे होंगे. So don't fight. Let's be together. और एक छोटा सा request for all of you: be a student today. Be in the journey together. So don't be a parent to your child. आपको ना बच्चे को नहीं बोलना देख अंकल क्या बोल रहे हैं, ये नहीं बोलना. ठीक है. Be in this together. आप भी as a student बैठे हो और आपके बच्चे भी as a student बैठे हैं. Let's do it together and let's see where we go. ठीक है. So studies के लिए ये किस ने सुना है और बोला है कि यार हमें ना फोर्स करना पड़ता है बच्चों को. और by the way think about it, अगर पेरेंट्स फोर्स ना करें और टीचर्स फोर्स ना करें तो आपके हिसाब से क्लास में कितने बच्चे पढ़ेंगे? पढ़ाई करेंगे. स्कूल तो चले जाएंगे मस्ती करने के लिए, लेकिन पढ़ेंगे कितने अगर पेरेंट्स पीछे ना पढ़े और टीचर्स पीछे ना पढ़े हो? Do you remember your time when teacher used to not come और पता चला टीचर की छुट्टी और हमें फ्री पीरियड मिल गया? क्या मजा पापा? Yes, no. So forcing, बिना फोर्स के पढ़ाई नहीं होती, राइट? डिस्टर्बेंसेस, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, घंटी बज गई एंड वी गेट डिस्टर्ब्ड. गेटिंग चिल्ड्रन रेडी फॉर स्कूल एंड ट्यूशंस, भेजने के लिए कितना एफर्ट मारना पड़ता है गाइस. ऐसे तो म्यूट करके तो नहीं चलेगा काम. और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आई नो इट कैन, दीज क्वेश्चंस कैन बी एम्बैरेसिंग फॉर पेरेंट्स, क्योंकि हम भी उसी रोड से गुजरे हैं और हमें भी पता है हमने क्या किया, और हमारे बच्चे भी वही कर रहे हैं ऑलमोस्ट. सो माय रिक्वेस्ट इज पार्टिसिपेट. Too much Right. effort managing the time. Yeah. Managing time and pulling him to get ready faster, giving him food. It's like too much of challenge. Exactly. हमारा कॉन्फिडेंस लेवल नीचे हो जाता है, बच्चों की सेल्फ एस्टीम नीचे हो जाती है पढ़ाई की वजह से, मार्क्स नहीं आते ठीक से. द स्ट्रेस एंड डिप्रेशन इट ब्रिंग्स, इट रिक्वायर्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग कि यार कर लिया, होमवर्क कर लिया, क्लास वर्क कर लिया, पढ़ाई कर ली, सेल्फ वर्क कर लिया, एग्जाम के लिए तैयारी हो गई. एंड देन द होल डील अबाउट स्क्रीन्स व्हिच हैज कम अप कि यार कुछ भी हो जाए, दो स्क्रीन्स आर अ बिग प्रॉब्लम इन द एरिया ऑफ स्टडीज. And how many of you heard your children say, यार मम्मी बोरिंग होती है यार, नहीं पढ़ाई होती, पापा स्टडीज आर बोरिंग. स्पेसिफिकली वो वाले सब्जेक्ट्स मुझे अच्छे नहीं लगते. And how many of you are facing this whole thing कि I can't concentrate well on my studies, I can't be focusing on it, and your children don't focus on it. गेम्स खेल रहे हैं, 3-3 घंटे खेल रहे हैं, बिल्कुल फोकस नहीं हट रहा है, लेकिन जैसी पढ़ाई हो रही है 10 मिनट के अंदर फोकस हट जाता है. देखा है? Have you experienced this with your children, with yourself, right?
तो ये चल रहा है. Okay, so एक छोटा सा ना मैं actually I wanted to do a poll right now for all of you कि पढ़ाई के लिए, ठीक है, आप किस चीज के लिए, have you heard this? I'm just launching a poll. My request is each of you and participate personally for you. It's a multiple choice poll. It's come onto your screen. Personally, what are you relating to out of all this? What all? And you can mark everything and anything. And you can look at your children also and find कि उनके लिए क्या है and answer the same. Because if you're using the same login, then एक ही आएगा father, parents के लिए और बच्चों के लिए. So I'll just have 6 people participate. Can we have more people? My child does not want to study. My child doesn't like studying. My child lacks focus. Lot of potential, but effort नहीं डाल रहे हैं. Then they ask this question: why should I study? Where will I use it? Despite the tuitions we've been sending them, they don't score well. We have to force them to study, force them to go to their tuition. They don't like X, and when I said X subject, it could be anything. किसी के लिए maths खराब है, किसी के लिए science खराब है, किसी के लिए science history खराब है, so whatever their X is. And a lot of us say कि यार हमारी टीचर ही अच्छी नहीं है, उसको पढ़ाना ही नहीं आता, हम बोर हो जाते हैं. So just keep adding on. I still have 10 people missing. Come on guys, participate. मतलब कैमरा नहीं खोल रहे हो, ये तो करना जरूरी है यार, आगे नहीं जाएंगे. Come on. 27 guys, कहाँ पे हो? Only if I could figure out कि कौन नहीं कर रहा है, I could have called down the names. I'm assuming जिन्होंने कैमरा नहीं खोला है वही नहीं कर रहे हैं. So another 30 seconds, guys, come on, participate. तभी पता चलेगा कि है क्या, and I'll share with you exactly लोग बोल क्या रहे हैं. Still about 8 people haven't responded. ठीक है, आगे चलते हैं यार. And people are not interested. I can't do anything about it right now. Okay, here it is. So my child doesn't want to study. It's about 25%. My child doesn't like studying is 29%. Maximum है कि यार मेरे बच्चे में ना potential बहुत है, लेकिन effort नहीं डाल रहे हैं. That has scored 71%. You can see the results, right? And then the next point is my child's lack focus or lacks concentration. By the way, बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और मैं बच्चों के सामने बोल सकता हूँ कि ये जो लाइन लिखी है ना, my child lacks focus and lacks concentration, it's a lie. आपको सुनाई दे रहा है मैंने क्या बोला? ये झूठ है. क्या आपके बच्चे वो एक्टिविटीज जिसमें उनको मजे आते हैं उसमें fully concentrate करते हैं, नहीं करते? Do they concentrate on their games? Do they concentrate on their sports? When they are listening to music, are they concentrating fully? कई बार तो ऐसा होता है वो खेल रहे होते हैं और हम बुला रहे होते हैं, उनको सुनाई भी नहीं देता है, इतनी ज्यादा concentration हो रही होती है. Yes or no? So my child lacks concentration is incorrect. Is factually incorrect. They don't like it and that's why they don't want to do it. उनको मजा नहीं आ रहा होता ना, इसलिए वो नहीं कर रहे होते. Okay, in the next few are I don't like some subjects and all that. Great. So जब ये चीजें चल रही होती हैं, and this question is for all of you, okay, and my request would be please unmute and share. जब ये चल रहा होता है सब कुछ, ठीक है, तो इसका impact क्या होता है? तो मैं ना एक पोल और कर देता हूं, उसमें बताना कि जब ये चीजें चल रही होती हैं तो आपके ऊपर और बच्चों के ऊपर impact क्या है? Here it is in front of you. और कुछ missing हो जाएगा ना, we will have people unmute and say it out. There's a breakdown in relationship with them. Altercation शुरू हो जाती है parents और बच्चों के बीच में. There is altercation and fights between spouses. आप ऐसे करते हो, तुम ऐसे करती हो, वो शुरू हो जाता है. Stress levels हमारा increase हो जाता है, उनका stress level increase हो जाता है. So children, please do participate in this and ask, tell your parents to just put it in. Impacts my health, my peace of mind, my tiredness, exasperation की यार कब सीखेंगे, कब हम खत्म करेंगे, कब तक पीछे पड़ना पड़ेगा. फिर lot of time we feel inadequate कि यार करें कैसे. और जब हम बच्चे को डांट देते हैं इस चीज के लिए और गुस्सा भी कर देते हैं, and I've seen a lot of parents actually use hitting also, उसके बाद गिल्ट भी आता है कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए. Feels that something is wrong, something is missing in them, something is missing in me. Come on guys, come on यार, ये तो बहुत सिंपल तरीका है पार्टिसिपेट करने का, इसमें तो बोलना भी नहीं पड़ रहा, कैमरा भी नहीं ऑन करना पड़ रहा. Quick, and I hope children are also participating. Yes, no? बच्चे कुछ अपनी पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं ना कि हाँ यार ये हो रहा है हमारे साथ. Okay, great. So we still have about 6, 7, 8 people not
responding yet, I'm ending it again. Okay, so जिन्होंने नहीं किया, let it be. ये results आ रहे हैं. So the biggest one again is my stress level 81%, their stress level 67%. Peace of mind obviously gone. And the next one is कि breakdown हो रहा है हमारा relationship के लिए. Now, if I ask all the parents sitting here and ask in front of children, who is the most important person in your life? जिसके लिए आप कुछ भी करोगे, कौन है वो? क्या बोलोगे? हाँ? Our children. Our children. बच्चे ही ना, साथ ही बैठे हुए चाहे नहीं बैठे हो, उसी के लिए सब कुछ हम करते हैं और उसी से झगड़ा पड़ा होता है, उसी से नाराजगी हो रही होती है, उसी से लग रहा होता है भाई यार ये क्या, और बच्चे भी बोल रहे होते हैं मम्मी मेरे फ्रेंड की मम्मी ज्यादा बेटर है, पापा वो ज्यादा बेटर है, आप वैसे क्यों नहीं बन जाते? बोलते हैं ना बच्चे भी ऐसे ही, राइट? चलो, इसके अलावा व्हाट इज द इम्पैक्ट? लेट मी नो व्हेन दिस ऑल दिस इज हैपनिंग इन होल एरिया ऑफ स्टडीज, क्या इम्पैक्ट है बताओ? ये जो आ गया है लिस्ट में सामने वो तो आ ही गया है, बट बियॉन्ड दैट एनीथिंग एल्स? You can quickly unmute yourself and share it. And my request to children, जब ये हो रहा होता है घर में और हमें नहीं मजा आ रहा होता और पेरेंट्स पीछे पड़े होते हैं, डांट रहे होते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, टीचर्स भी कंप्लेन कर रही होती हैं, तो आपको कैसे लगता है? Sushant, my self-esteem goes down and I feel that I am not being a good mother. There's something not okay with me that I am not being able to get things on track. Okay, that मेरे को खुद अपने पे लगता है कि यार I am not being good. Okay, so that is what I was wanting to cover in guilt, but anybody else? Sushant, I want to share that. Sure, please. So when I did your Parvarish course, so till that time I was quite after her life for the studies and all. But now I'm not. So we both are sitting and we both are enjoying. She said, Mama, you used to be like this before. But then yes, I am chilled out completely. And grades उतने ही रहे हैं, कोई नीचे नहीं आया है. और जो मुझे डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा, she is like happy now and she's sitting and she's enjoying the session. So what brought you in the session then? अगर ऐसे ही मैं कहा 100% और क्या बढ़िया हो सकता है, मैं कुछ कहूँ नहीं और बढ़िया आ जाए. क्या हो रहा था? I just okay, wanted to know. Brilliant. Great. Anybody else? The guilt है feeling in any way. Anybody else? Yeah, same here. I always feel, yeah, I'm not a good mother, or what can I do more for her? Sometimes there's a guilt also. Sometimes. Okay. What else? So hi. So सिर्फ mothers नहीं बोल रही ना, fathers भी है ना? मैं बोलता हूँ. हाँ, thanks. सर हमेशा ये लगता था कि there has to be a better way. This is not the right way. So I always felt there has to be a better way. There is a better way. Yeah, there is. By the way, I'll tell you what. मैंने भी ना वैसी ही पढ़ाई करी है जैसे आप लोगों ने करी है और आपके बच्चों ने करी है, लेकिन पिछले 10 साल से जब से ये बना पाए ना हम लोग, seriously, I really wanted to study like this myself. And the good thing is I've been able to do it because designing it के लिए मेरे को सबके अंदर घुसना पड़ रहा है, हमारी टीम को घुसना पड़ रहा है. So we're really enjoying making it. और लगता है कि यार अगर ऐसे पढ़ाई करी होती तो क्या मजा आता. And I will today not just talk about it, but give you a glimpse of it. ठीक है? Anything else? कोई और impact हो रहा है? And my request is to children also. There are children sitting here, यार. Please unmute yourself. डरो मत पेरेंट्स से, मैं संभाल लूंगा. बोलो क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट होता है जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, मजा नहीं आ रहा होता और मम्मी पापा पीछे पड़े होते हैं, टीचर्स पीछे पड़े होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं. कम ऑन, लेट्स हैव चिल्ड्रन पार्टिसिपेट. एनीवन, क्विक. सो मेरे को 2-3 बच्चों का तो नाम पता चल गया था. सिद्धांत, आदित्य, कम ऑन यार, अनम्यूट, बोलो. बाकी तो बच्चों का नाम ही नहीं पता चल रहा मुझे. Not a good mother. Not a good mother, वो तो आपको लग रहा है, मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ, उनको कैसा लग रहा है? हाँ सिद्धांत, अब आदित्य नहीं बोलना. अरे नहीं डांटेंगे मम्मी पापा, जो मर्जी बोल दो. आदित्य if you are saying बोरिंग लगता है. ओके, और जब मम्मी पीछे पड़ी होती है तो कैसा लगता है? Not good. Not good. हाँ, not good is not a good word, but हम और ज्यादा बोलना चाहते हैं, but not a problem.
Great, and thanks. And what's your name, Pratibha? What's your daughter's name? My name is Naira. Myra. Thank you, Myra, for being the first child picking up. And Roma, what's your child's name? It's Ariman. Ariman, thank you. और एक रिक्वेस्ट बाकी सबके लिए, देखो पार्टिसिपेट कर लो, 1 घंटे के अंदर और ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट मजे तो ले सकते हैं. So ये इम्पैक्ट होता है. So मैं एक आपको चीज बताऊं. So what is this whole program all about? This session is actually about you. यहाँ पे कोई ऐसा पेरेंट बैठा है जो अपने बच्चे को हैप्पी, हेल्दी, सक्सेसफुल और सिक्योर नहीं देखना चाहता. Anybody sitting here? That you want your... Meera wants to speak. हाँ Meera, great, thank you. Sure. When mama scolded me, I feel a little bit bad. You feel a little bit bad. Little. Acha. Okay, No, great. this much. Oh, this much. Great, great. और मम्मी के से वैसे प्यार करने का मन करता ना, जब डांटती हैं तो मम्मी को प्यार करने का मन नहीं करता ना. Okay, great. So now, any parent sitting here who doesn't want this for your child, yeah, they should be happy, healthy, successful, and secure. कोई बैठा है यहाँ पे? And we all know that education is a great medium to do that. Yes or no? The education can actually make this achieve, and it's a great medium, and every child has to go to school. So मतलब 14 साल तो ये होगा. And it is a medium, it makes us do that. Yes, no, कुछ तो बोलो. अरे क्या हो गया? Yes, sir. Right. And yet एक चीज सोचना, every child goes to school for 14 years, right? Nursery, KG and 12th. What is the purpose behind it? अगर हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोगों को बोलूं अभी कि यार अभी अपने जहां बैठे हो ना, घर की छत पे जाओ और टैंक को टच करके आओ, वाटर टैंक्स, क्या बोलोगे मेरे को? सबसे पहले थॉट क्या आएगा आप सबके दिमाग में? Why? एग्जैक्टली सबके दिमाग में आया ना बच्चों, क्यों करूं ये तो बता दो. चाहे उस काम में 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे ऊपर जाने में और टच करके आ सकते हो. सबके दिमाग में आ रहा है क्यों करूं, जो काम सिर्फ 10 मिनट का है. हमारे बच्चे और हम खुद 14 साल स्कूल गए, हमने उस वक्त वाई पूछा. एक्चुअली हमने भी पूछा था, शायद कई लोगों ने, मेरे जैसे लोगों ने नहीं पूछा होगा कि डर लगता था कि यार वाई पूछेंगे तो थप्पड़ पड़ जाएगा, चलते चले जाओ क्योंकि मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, कर लो. लेकिन आजकल के बच्चे पूछते हैं ना, मम्मी क्यों पढ़ा रहे हो, पापा क्यों पढ़ा रहे हो, टीचर क्यों पढ़ा रहे हो, और रीजन क्या मिलता है? मैंने सुना है बहुत टीचर्स और पेरेंट्स बोलते हैं यार कोर्स में है, अगली क्लास में जाना इसलिए पढ़ ले. तो बच्चा कहता है यार मैंने तो कोर्स बनाया नहीं है, हटा दो. And if I give you a real example, during COVID, legally the government reduced the course. Yes, no? Even 10th का बोर्ड का उन्होंने कोर्स कम कर दिया था. So इसका मतलब 11th में जाने के लिए उसकी नीड नहीं है ना. अगर इतना ही क्रिटिकल होता तो कम कैसे कर दिया? So उससे 1 साल पहले ज्यादा पढ़ के लोग 11th में गए और उसके 1 साल बाद भी ज्यादा पढ़ के जा रहे हैं. तो वो जो कोर्स इन बच्चों ने नहीं किया, what was the reason for it? What is the value of it if it could be removed? सोच सकते हो. So if you create a bigger context कि यार मुझे, अगर मैं बच्चों को बोलता हूँ ना बच्चे खेलने जाना है, all of them will go right now, right? Yes, no? चाहे जो भी आपको पसंद है वो खेलना है, चाहे वो गेमिंग है, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे फुटबॉल है, चाहे हॉकी है, चाहे बैडमिंटन है, 1 सेकंड में भाग जाएंगे ना सारे. Yes or no? Yes. Yes, sir. क्यों भागेंगे? They enjoy it. They don't like want to study. क्योंकि उनको उसी वक्त कुछ मिलता है. अगर हम उनको बोलेंगे ना आज खेलोगे तो तुम्हें मजा परसों आएगा, कोई नहीं जाएगा. लेकिन हम कहते हैं आज पढ़ोगे ना 14 साल बाद बहुत अच्छी लाइफ होगी. Instant gratification. तो हमें दिखता ही नहीं है भाई. और फिर वो हमें देखते हैं कि यार ये पढ़े लिखे लोग रोज ऑफिस से परेशान आते हैं, तो ये मजे कब करते हैं? So, एक प्रॉमिस आपके लिए कि ना आपको ये समझ में आ जाएगा आज के सेशन में कि यार ये हो क्यों रहा है. दूसरा, इसको कैसे करना है. I'll give you an experience right now and how can you and your children learn this. So this session is not just कि यार अभी बताया, दिखाया और ट्रेलर देके खत्म कर दिया. I will tell you how you can make this real for your life and for your children's life.
तो जो जसप्रीत बात कर रहे थे और जो अभी निधि बात कर रही है कि यार हाउ कैन दिस बी डन, I'll introduce you to a program which Parvarish does. It's a very short program. It's not a very short, but a short program where this all thing can alter in the next 2.5 months. All of it. And I can tell you, if you and your children do it, जितनी भी tuitions पे जाते हो ना, सब बंद हो सकते हैं. Zero. My children have never ever gone to tuitions. Ever. Not even जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती. एंड बाय द वे जैसे कि यार आपके पेरेंट्स, आपके बच्चों को ना एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा आज के बाद, क्योंकि अगर सोचो ये सीख के बच्चों को पढ़ाई में मजा आने लग जाए, इफ यू एंजॉय स्टडीज एज मच इफ नॉट मोर एज मच एज यू डू योर गेमिंग और स्पोर्ट्स और खेलना, तो करोगे क्या पढ़ाई? अगर पढ़ाई में भी उतना ही मजा आने लग जाए जितना खेलने में आता है. आई एम आस्किंग द चिल्ड्रन, वुड यू? कि क्रिकेट खेलने में जितना मजा आ रहा है उतना ही मजा मैथ्स करने में आ रहा है. Yes. प्रॉब्लम क्या है? मैं मैथ्स से भी मजे लूंगा और साइंस से भी मजे लूंगा और हिस्ट्री से भी मजे लूंगा और क्रिकेट से भी मजे लूंगा और गेमिंग से भी मजे लूंगा, सब में मजे आ रहे हैं. इफ दैट्स पॉसिबल देन ऑब्वियसली देयर इंटेंसिटी एंड देयर परफॉर्मेंस विल गो अप. अगर मैं आज अभी बच्चों से पूछूं जो जो गेम खेलते हो, अगर मैं अभी सरप्राइज टेस्ट ले लूं उस गेम का, अभी विदाउट इवन वार्निंग यू, हाउ मच विल यू स्कोर आउट ऑफ 100? 100 without even studying for it. I'll say अभी सरप्राइज टेस्ट ले लेता हूँ कि यार वो वाली गेम है उसका सरप्राइज टेस्ट दे दो, you will score 100 on 100. So it's not about learning, it's all about कि यार मेरा इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि मैं अपने आप उसको सीखे जा रहा हूँ और एक्चुअली बेटर सीख रहा हूँ. And that's what we want to do in studies right now. Okay, so एक छोटी सी ना so my request to all the parents, अभी से लेके एंड तक we'll go through a process. So please do not start analyzing it. आप ये सोचो कि आप एक लाइव क्लासरूम में बैठे हो. Yes, no, ready? And I'll take you through a process, and at the end of the process, we'll have a conversation कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये क्या पढ़ा था. Ready? Everybody? Yes, no? Yes. एक yes आ रहा है यार, सिर्फ रेनू ने कह रही है यार, बाकी सब. And my request to people who are still not switched on video. Yes, sir. No? Thank you. उस पे डाल दो, चैट पे डाल दो चैट. और my request to all the people who are on videos off, please switch on your videos. इस प्रोसेस में चलेंगे और खुद करेंगे और मजे लेंगे. ठीक है? सो उस प्रोसेस में जाने से पहले एक क्विक क्वेश्चन, एक छोटे से और प्रोसेस में लेके जाऊंगा स्पेसिफिकली फॉर एडल्ट्स. बच्चे तो उस प्रोसेस में ऑलरेडी हैं, लेकिन एडल्ट्स को ना थोड़ा सा ले जाने के लिए मुझे बच्चों अपने पेरेंट्स के साथ ना एक छोटी सी एक्सरसाइज करने दो. आप भी कर सकते हो. So all of you just close your eyes for a couple of minutes. Just sit where you are. Just close your eyes. Everybody. बच्चे आप भी अपनी आंखें बंद कर लो. And let's go to a journey and then we'll start it off. So let's go to a time when all of you were, and I'm talking to adults, बच्चे तो उसी age group में होंगे, were about 12, 13, 14. I'm talking to the adults right now. कि आप 13, 14, 15 साल के थे. Imagine right now that you slept on a Sunday evening after spending your weekend having fun, and you slept on your Sunday, and suddenly the alarm clock or your mom or your dad is waking you up. Utho, school jana hai. And be in that space. Okay, you're not a parent right now, you're not an adult right now, you're a 14-year-old, 13-year-old, and suddenly आपको लगता है यार मंडे आ गया, मुझे अब फिर स्कूल जाना है. तो आप मम्मी को बोलते हैं अच्छा 5 मिनट और, अच्छा 2 मिनट और, अच्छा भी उठता हूँ, अच्छा भी उठती हूँ. और उठते हुए भागते हुए बैग के अंदर किताबें रखी, अपना पेंसिल बॉक्स रखा, जल्दी तैयार हो रहे हो और बस पे या भाग के या साइकिल पे या पापा के स्कूटर पे या गाड़ी पे स्कूल पहुंच गए. See yourself standing in front of your school. Then you see the school's name, the gate, और आप उस गेट से स्कूल के अंदर चले गए और एक एक करके आपकी क्लासेस शुरू हो गई. सबसे पहले वो वाली क्लास आई जिसमें आपको बहुत मजा आता है. यू लव द टीचर, यू लव द सब्जेक्ट. जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट यार वो वाले सब्जेक्ट करते हुए उस क्लास में 45 मिनट, 40 मिनट्स, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? क्या फीलिंग हो रही थी? आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे थे? क्या क्या चल रहा था? आफ्टर दैट अ टीचर वॉक्स इन, अ टीचर हु यू डोंट लाइक, a subject you don't like,
How is your experience sitting through that subject? वो कौन सा subject था जिसमें से यार अब ये टीचर आ गई, अब ये मुझसे क्वेश्चन पूछेगी, मुझे इसका आंसर नहीं पता, फिर मेरे को खड़े होके कुछ करना पड़ेगा, लोग हंसेंगे मुझ पे. Also just think about those examination time, जब कोई टीचर आके बोलती थी कि बच्चों 2 weeks later your exams are starting. क्या एक्सपीरियंस होता था कि अब क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, रोज क्या क्या होगा. गेम्स छोड़ो, घूमना छोड़ो, मूवीज छोड़ो, और अब चुपचाप पढ़ाई करना शुरू कर दो क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं. And also quickly let's go to a time when we are going back after the exams to take the results. जब रिजल्ट डे होता था और पापा मम्मी को साथ लेके जाना होता था, शायद हमारे जमाने में नहीं, बट रिपोर्ट कार्ड मिलनी हो रही थी, उस टाइम पे क्या फीलिंग्स आती थी, क्या एक्सपीरियंस होता था कि अभी यार मिलेगा, कैसे आएंगे, डांट पड़ेगी, गुस्सा होंगे, या बहुत मजा आएगा, मैं टॉप कर रही हूँ. So as you are experiencing that time of your life, just open your eyes and right now and be in that space that you are that child. Okay, abhi adult mat banna. So it's a child sitting in with another child at your home. Right, you're there? Yes, no? How many of you could go to that space कि हाँ यार ये चल रहा था हमारे साथ? Yes, yes, और very much. Brilliant. So एक सवाल, जब आप ये काम कर रहे थे और स्कूल जा रहे थे, तो स्कूल किस लिए जा रहे थे? मतलब व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट? व्हाट वाज द होल एक्सपीरियंस ऑफ स्टडीज, नॉट द एक्सपीरियंस ऑफ स्कूल. देखो स्कूल में हमने बहुत मस्ती करी है, हमारा स्टडीज का एक्सपीरियंस कैसा था अपना? And I know it can be a bit difficult for parents to share it in front of your children. Don't worry, it's all the same. So how many of you? क्यों जाते थे? बोला कि जाना, पता ही नहीं था, बोला जाना है तो जाते थे. तो इतना फ्रीडम तो थोड़ी था कि पेरेंट्स को क्वेश्चन भी कर नहीं सकते थे ना उस टाइम पे. तो जाना है, Absolutely. That's the way it is. इसलिए जाते थे. Hello, Okay. Sushant. Yeah. My bone of discontention is that I've always loved studies and my child does not. Okay. So, this is where I differ and this is where I have. प्रभा एक काम करेंगे, अभी पेरेंट की तरह बात नहीं करेंगे. अभी अपनी बात. Seriously, I've always enjoyed studying. Okay, great. So I've always enjoyed studying. So, when my child says I don't enjoy, I cannot understand that. I cannot fathom it. Pratibha, Pratibha, for the next half an hour, don't be a parent. Don't think about your child. Think of yourself. ठीक है? Let him or her think of yourself. ठीक है? तो अभी ना वो comparison मत करो कि यार मुझे पसंद था उसको नहीं. आपको पसंद था वो लिख लेते हैं. ठीक है? I've always loved studying. Okay, So got for it. me, I used to wonder what all that boarding was. Sitting curiously for that 7th and 10th and studied all in tension. ये boarding क्या होता है, उसके बाद क्या होगा? Because I never had a correct guidance in my small town. So that was all about my schooling. Okay, got it. And my request is a whole world of imagination. It used to open one new world. Every subject used to bring one new world, and that was very interesting. Okay, got it. Perfect. Great. So we had students like you also, obviously, wondering what the boarding was, didn't have the correct guidance. Okay, what about others? And children, you can participate. कि यार जब हम ये सब कुछ हो रहा होता है, पढ़ाई हो रही होती है, सुबह उठ रहे होते हैं. What was the experience when you were in a classroom of a teacher you didn't like? How was that? तब क्या हो रहा था? I would like to share. SS was one subject when I was in 8th. The teacher would come and I would literally sleep in her class. Okay. SS is social studies. हाँ, social studies. मैं सो जाती थी. फिर मेरे पापा was also a lecturer in the same school. He was teaching 11th and 12th English. So then the teacher would go and would complain to my father that पता है आपको आपकी बेटी सो गई थी मेरे क्लास में. And luckily my father was like not too much into studies at that time. So he was like हाँ उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए वो सो जाती थी. मैम बोलती थी रोज उसकी तबीयत खराब हो जाती because she was so boring that I would sleep. Then I went to 11th standard and I changed the school. And in commerce, we had one sir. He would come inside the class and would start asking the children, what is the definition? What is this? What we studied in last class?
and I was not so studious, so I would hide myself to save myself कि मुझे पूछना दे गलती से. Correct, So correct, this correct. was And my thank you for experience. saying it in front of children. Good, great. And bachcho, my request is, देखो, the reason I got you also in is please share your stuff, okay? So ये जो parents भी बोल रहे हैं ये बहुत normal है. मेरे साथ भी यही होता था. बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सोया पड़ा होता था. मेरी इंग्लिश की टीचर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछती थी तो लोग मुझे ऐसे अबे तेरे से पूछ रही है, तेरे से पूछ रही है. And मैं sleep, I'm actually out, zonked out. अरे कौन सा चैप्टर, कौन सा किताब, सब बंद. Exactly, same. Yeah, Monica. Anyway, so a couple of people, ज़्यादा नहीं. उसके बाद आगे चलेंगे, बहुत काम है अभी. So I actually want a couple of children to speak up. यार, it'll be great. Yeah, Monica, after you, a few children, huh? Okay, so my question always been that why do I need to study all the subjects? जो मुझे नहीं अच्छे लग रहे वो क्यों पढ़ा रहे हो? और कौन से अच्छे नहीं लगते थे? मुझे ना मैथ्स अच्छा नहीं लगता. अच्छे And कितने? talk to Smera now. Yes, Smera, which subject you don't like, बेटे? Yeah, same maths. मैं ही बोलेगी, वो पक्का गारंटी है. मम्मी को नहीं अच्छा लगता तो बच्चे को तो छोड़ ही दो. हाँ तो उल्टा होता है, मम्मी को अच्छा लग रहा है, बच्चा फिर भी नहीं पढ़ाई करता. मैथ का ना मैंने एक डेफिनेशन सुनी थी अपने बच्चों से, पता है क्या? मेरी आत्मा तुझे हमेशा सताएगी. MATHS. My children told me about this. Wow man, क्या डेफिनेशन बनाई है बच्चों ने. बच्चे सुनी हुई है. My maths is my I love I like. Okay, great. So Siddhant, I do maths like every day. okay, great. देखते हैं अभी. Good Siddhant. So great. Anybody else? Anything else? कि यार उस space में क्या चल रहा था? Like 14 years, we all studied, right? हमें सबको लगता है यार पढ़ाई करनी जरूरी है. But मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ सबसे और बच्चों से भी. 3 साल पहले कोई टॉपिक पढ़ा था. आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी. आपने न्यूटन के लॉज पढ़े थे. हमने कुछ और पढ़ा. इसका यूज कहाँ किया लाइफ में? Except for passing the marks and passing the exams. Where have we actually used it in our life? सब लोग बोलते रहते हैं जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी. कहाँ काम आई? नहीं आई. लोग मुझे बहुत बोलते हैं, मैं मैथ्स की टीचर से पूछता हूँ मैथ्स क्यों पढ़े. वो कहते हैं मैथ्स तो बहुत जरूरी है, रोज करते हैं. मैंने कहा क्या करते हो रोज? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई. इसके अलावा मैथ्स में हम क्या करते हैं? LCM. सर आप पढ़ते हो, यूज कहाँ करी पेरेंट्स ने? कहाँ पे पेरेंट्स ने यूज किया ये? हमने अपनी लाइफ में LCM कहाँ यूज किया? हमने क्या एक्चुअली कैलकुलेट किया कभी LCM कैसे होता है? LCM इससे ऐसे बनेगा. और बाय द वे प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई गेट्स ओवर इन क्लास 3. तो उसके बाद की मैथ्स का क्या किया हमने आज तक? ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज करी? वी आर अबाउट 30-40 people sitting together, ज्यादा होंगे इंक्लूडिंग. Measuring. कभी यूज करा एक्चुअली अडल्ट? तो I फायदा. guess I feel many of the times we have used it unintentionally and unknowingly because the पूर्वा, hello. पूर्वा मैं सुन रहा हूँ. आपने बोला अनइंटेंशनली यूज किया है. हम 40-45 लोग इकट्ठे बैठे हैं अभी. I want at least one person to remember मैंने यहाँ यूज किया था. At least one. Yes, calculations तो हम use करते हैं day to day life में. Addition, डिवाइड मल्टीप्लाई छोड़ दो, वो तो मैं बोल रहा हूँ आप कर रहे हो. एंड बाय द वे उसका भी एक जवाब है. हम लोग सब सब्जी खरीदने जाते हैं. Correct. जिससे सब्जी खरीदते हैं 99% chances he is not gone to school. Yes, but still he knows it. He does much better than us. Much faster and much more accurate. Trigonometry. तो फिर क्या किया हमने यूज? हमने trigonometry. Many of the science concepts also we do use, or if we are reading something somewhere while traveling or something, we know certain things because we have learned those basic things in our school days. So that is why we know it. अभी ना my only request is specifically सोचो. करा होगा, श्योर होगा. लेकिन मैं ये नहीं कह रहा खराब है. मैं बच्चों के सामने ये नहीं बोल रहा पढ़ाई खराब है. पढ़ाई इज अ ग्रेट रिसोर्स. अभी कर
while traveling, maybe by railway, maybe by plane, there are so many junction names or the area's name or the country's name we know unintentionally because we have done that back in our school days in the geography or maybe in the history. Or while traveling, if we pass some station, we know the significance of that station because we have studied history in our school days. Agreed. तो पूरा मेरा Maths, maths, Pythagoras theorem. one second, एक एक करके. Yeah, sorry. पूर्वा, आपको उसका नाम पता है, आपके साथ जो बैठा है उसको नहीं पता है, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं. Okay. डिफरेंस डिड इट मेक टू योर लाइफ? रियलिटी में डिफरेंस क्या हुआ? आपको पता है कि हाँ नागपुर से निकल रहे हैं, यहाँ के ना अमरूद बड़े अच्छे होंगे, सपोज. Yeah. तो वो इंफॉर्मेशन आपको पता है और आपके साथ वाले बैठे हुए को नहीं पता. व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक टू योर लाइफ? ये पता होने से मुझे फर्क क्या पड़ा? Yeah, I will tell you, if I know this information, I will definitely, I'm going to share this with my child. And maybe if I get a chance, I will go and buy that particular thing. So that is the implementation. आप अगर ट्रेन पे जा रहे हो, स्टेशन से निकल रहे हो ना, उस स्टेशन पे वो इतना बिक रहा होगा कि आपको पता होने की जरूरत नहीं होगी. हम ना मे बी यूज कर रहे हैं. सो माय रिक्वेस्ट इज अभी 5 मिनट में सोचते हैं, करते हैं, अभी करके देखते हैं कि डिफरेंस क्या था. सो प्रतिभा, यू आर द लास्ट. क्या आप कुछ कह रहे थे? Yeah, we tend to use a lot of Pythagoras theorem and we want to determine the shortest distance, कैलकुलेट किया? एक सेकंड प्रतिभा, कैलकुलेट किया एक्चुअली? Mind, just No, mind, actually calculate किया अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. No, Have you not done that it? way. अगर मैं नहीं ये किया ना? रास्ते से जाऊंगी और मैं वो रास्ते से जाऊंगी. sorry. मैं ना कॉन्सेप्चुअल में नहीं जाऊंगा प्रतिभा. Yeah. हमने नहीं किया है. और बाय द वे हम ना सिर्फ गूगल करके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं. और बाय द वे हमारी कोई भी रोड राइट एंगल ट्राइंगल में होती नहीं. That is true. That तो is फिर true. शुरू नहीं लग सकती. No, it's the base of the. I'm sorry, प्रतिभा. देखो लॉजिक And area as well. Area, when we are looking for a house or we want to determine, how to design this space, area. Great. And if we are going anywhere, the फिर topography of that place. मैं फिर प्रतिभा फिर से वही बोल रहा हूँ, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के अलावा Maths specifically, किसी भी or any स्पेसिफिक. subject. तो एक काम करते हैं, जस्ट होल्ड ऑन, अभी होल्ड ऑन करते हैं और फिर आगे चलते हैं. आप कह रहे हो मैं किसी जगह जाऊंगी तो शायद, तो एक इंसान कहीं किसी जगह जाएगा तो शायद यूज होगा. व्हाई डू यू टेक thousands of children in the school through the same process who may not even go there? It's a very ineffective. Develop your critical thinking. अरे रुको, अभी करते हैं. अभी आप मे भी सब बोल रहे हो. Do you want me to take you through a process where you actually get क्या फायदा होने वाला है और कैसे होने वाला है? Yes. चलें? Yes, I guess that I was creating this for all of you कि ना हम अभी सवाल ना मे भी अच्छा ये हो रहा होगा, अच्छा वो हो रहा होगा. But think about it for a minute. 14 years of schooling and we have no reason. I guess पता नहीं. I just want to interrupt. We will talk about this later, but definitely school education does come handy. But I will not discuss it right now because I don't want to eat out your time. I will discuss it. I'll take you through a process and definitely want to discuss. Because ये पूरा ना सेशन डिस्कशन का है. जब तक हम एक्सचेंज नहीं करेंगे ना, कम्युनिकेशन नहीं होगी और हम सीखेंगे नहीं एक दूसरे से. Yes. ठीक है. सो अभी एक काम करते हैं. सो अभी जो लग रहा है ना, मतलब why I wanted to have these questions is to start thinking कि यार isn't it very ineffective? हम बोलते हैं हिस्ट्री जान के अच्छा लगेगा. अरे उस हिस्ट्री को यूज कहाँ करेंगे ये नहीं पता. और शायद 99% of our people haven't used it. But there's a huge purpose behind history. अभी बात करते हैं उसकी. So एक छोटी सी चीज है ना, I'll take you through an experience. My request is आप सब वीडियोस ऑन कर लो because अब ना कुछ करेंगे इकट्ठा. I want you to do that exercise along with me and we do it together. So 1 minute ले लो. All of you bring something which is circular. आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में एक गोल टेप है. Actually एक बड़ी टेप है, एक छोटी टेप है. Bring anything circular. It can be also this. ये मेरे जो बॉटल है, बॉटल का कैप है. So anything which is circular, whatever size does not matter. मतलब अभी मैं
थोड़ी देर पहले ब्रेकफास्ट कर रहा था, तो प्लेट भी चलेगी, ये भी गोल है, ठीक है। सो कुछ भी उठा लो और उसके साथ एक स्केल लेके आना, एक स्केल, जितने लोग ला सकते हैं उतने ले आओ, जो नहीं ला सकते डोंट वरी अबाउट इट, इफ इट्स नॉट हैंडी डोंट वरी अबाउट इट, आई डिडंट टेल एवरीबॉडी टू ब्रिंग इट, इट वाज प्रीटी इम्प्रॉम्प्टू, so even if we have 5, 7, 8 people, bring this, sorry I dropped it, just give me a second. So a scale which is a straight scale, जो सीधा हो, मतलब बेंडेबल मत लेके आना, स्ट्रेट स्केल, हाँ परफेक्ट, थैंक्स अपर्णा। सो अपर्णा has got it, Monica has got it। कितने लोगों के पास एक स्केल और एक राउंड चीज आ गई है? ओके, 2 लोग, 3 लोग, Swati has also got it, Nisha has also got it, brilliant, Ruchi has also got it, and children please, आप लोग भी, okay, don't just expect adults to do this, let's all do it together। Aditya, you bring it separately, not with Aparna, do it separately, or you do it and Aparna you get a separate one, all of you do it separately, ठीक है? तो कितने लोगों के पास आ गया? Just put a yes on the chat so I'll know at least कितने कितने लोगों के पास आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके ग्रेट, ब्रिलियंट। सो 8 9 लोगों के पास हो गया और 8 9 लोगों ने यहाँ पे हाथ दिखाई दिया। सो एक मैं आपको ना एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट नहीं करना है, प्लीज डू नॉट स्टार्ट रिमेम्बरिंग, अच्छा ये तो वो फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं सोचना है। कैन यू गेट दिस? रिपीट, you are not going to calculate or think of or use the formula, because most of you may not even remember the formula, ठीक है? And a lot of children may not have studied it yet। कपिल के पास स्केल नहीं है यार, कुछ स्केल नहीं है, okay, not a problem, the question I'm going to ask you, maybe you will be already able to participate, कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग participate करेंगे। So करना क्या है, आपके हाथ में एक गोल चीज है, जिसके पास है, और जिसके पास नहीं है ये वाला देख लो, स्केल को यूज करके हमें इसका सर्कमफ्रेंस मेजर करना है, कैलकुलेट नहीं करना है, मेजर करना है। यू हैव टू यूज अ स्ट्रेट स्केल एंड मेजर द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल विच यू हैव इन योर हैंड। सो बिफोर गिविंग मी द नंबर कि कितना है, स्टार्ट थिंकिंग कि कैसे कैसे कर सकते हैं। अभी मत बोलना, टेक 2-3 मिनट्स, एवरीबडी थिंक्स ऑफ न्यू वेज, हाउ कैन यू मेजर दिस यूजिंग अ स्केल। सोचो पहले सिर्फ, तो अभी बताना मत, डोंट टेल मी। सो जिसके पास एक एक आइडिया आ गया, अपना वर्चुअल हैंड रेज कर लो so that I can call on you and we'll just first understand how can we do it, and if you don't have a scale just keep thinking कि स्केल के साथ मैं इसको कैसे करूं। So Aparna has put their hands up, anybody else? Okay, Vipul, great, anybody? Children कैसे मेजर कर सकते हैं? सिद्धांत, इसको कैसे मेजर करेंगे? सोनक, मीरा, what नहीं, wait, अभी बताओ मत सिद्धांत, रुक जाओ। If you have an idea, just put your hand up, I'll call on you। अभी सिर्फ आइडियाज इकट्ठे करेंगे, फिर मेजर करेंगे। Tell me, measure it, measure नहीं करना है, बताना है। So okay, 4, anybody else? How can you measure it? How can you measure this trait? And I would want to give a chance to the children first। अरे रुक जाओ विपुल, चीटिंग नहीं करनी है। ओके, निशा ने भी बोल दिया, ग्रेट 5। ओके, so I hope by the time other people are doing it, let me ask the children first and then go। So Nisha, what's your child's name? निशा, आपके बेटे का नाम क्या है? अधिराज। अधिराज, ओके, अधिराज कैसे करोगे, कैसे मेजर करोगे इसको, बताओ। नो फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस को ऐसे मेजर करके उसका डायमीटर निकालना है। ये तो डायमीटर निकाला, मुझे इसका चाहिए, गुड, कीप थिंकिंग, इसकी लेंथ चाहिए, डायमीटर की नहीं, इसकी लेंथ। ओके, आदित्य, would you want to say it? Aditya, have you done it one way? Keep thinking, keep thinking। Aditya, Aparna, your child is Aditya, right? Yes, yes। तो Aditya, सोचा कोई तरीका? सोचा नहीं, अभी नहीं। नहीं, ओके, you Aparna, you raise your hand, आपने किया? हाँ, इंद्रजीत found a way। ओके, बताओ। एक्चुअली मेरे पास बाजू में चार्जर पड़ा था, तो उसके लेंस से मैंने उसको राउंड
measure किया. You bent a charger wire around it and you could measure it. Okay, great. बाकी सब भी सोचते रहो अभी. Okay, Vipul, what did you do? सर वो string use करी. Okay, you had a string along. क्या ये earphones हैं या कोई string है? अच्छा, normal string है. Okay. गीतांजलि, सिमी, सिद्धांत, कैसे मेजर कर सकते हो? और तरीके बताओ. रबर बैंड तो स्ट्रेच हो जाएगा, तो वापस आ जाएगा, इनएक्यूरेट होगा. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. कीप थिंकिंग. या सिद्धांत? सोचो कैसे करोगे? स्केल को आप इस रोटेशन को एक जगह पे रखिए और स्केल के ऊपर आप रोटेट कर दोगे तो आपको सर्कमस्टेंस पता लग जाएगा. अच्छा, मनमीत, हाँ ग्रेट. मैं देख रहा था कौन बोल रहा है. मनमीत, एक बार दोबारा बोलोगे? बताओगे कैसे किया? You just mark a point on the circle. ओके, इसको मार्क कर दिया. And put it on the scale and just move this. ओके, ग्रेट. ये सबको समझ में आया? उन्होंने यहाँ पे मार्क किया, स्केल के ऊपर वो पॉइंट रखा और इसको एक बार घुमा दिया. ग्रेट. Anybody else? और कोई तरीका? सोचो. या सिद्धांत बताओ. या प्रतिभा, एनीबडी, एनीथिंग एल्स, एनी अदर वे? अभी 2 तरीके आए हैं हमारे पास. और कोई तरीका है? पढ़ाई होगा. नहीं, पढ़ा वड़ा नहीं होगा. ये यहाँ पे सब सिर्फ खोपड़ा यूज करना और कुछ नहीं करना. This way, I'm not sure. आपने ऐसा उसका डायमीटर लिया. ये तो डायमीटर है सिमी. ये मापना है. Not the diameter. Diameter is this. Okay, not a problem. Keep thinking. The whole idea is to keep thinking. Because touch the whole thing and then I take the measurement of my pen. Sorry. हाँ, oh great. कि ये बेंड हो सकता है. मैंने इसको ऐसे मेजर किया, उसके बाद फिर मैंने स्केल से इसको मेजर कर लिया. ठीक है. Okay, great. Good. Anybody else? कुछ और आइडिया आ रहे हैं आदित्य? Aditya, can you think of more ideas? How can this be done? और सोचो. आएगा. रुचि, शिवानी, रोमा. By putting a thread around it and हाँ, measure that. perfect. हाँ, वो thread and string तो लोगों ने बोल दिया, तो that is one. So when we do this with children, वो कई बार अपनी बेल्ट उतार लेते हैं, कई बार वो अपने शू का स्ट्रिंग निकाल लेते हैं. A lot of ladies even use their necklace. सब हो जाता है. सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तक याद नहीं आ रहा. नहीं, इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला नहीं है. ये फॉर्मूला नहीं करना, फॉर्मूला ही तो प्रॉब्लम है यार. यहाँ पे दिमाग चलाना है. सो 2-3 तरीके. और कोई तरीका? एनीबॉडी? क्विक. स्मॉल पार्ट्स में मेजर करेंगे. क्या स्मिता? स्मॉल पार्ट्स में मेजर करेंगे. कैसे बताओ? राइट, जस्ट एक्सप्लेन सो दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस. तो जैसे इसको छोटे पार्ट्स में कर देंगे डिवाइड और उसको फिर मेजर करेंगे. एग्जैक्टली. कैन यू गेट व्हाट स्मिता सेड कि हम इसको ना अगर छोटा करके स्ट्रेट मेजर कर लें कि यार अच्छा ये 1 सेंटीमीटर है, फिर उसके बाद एक और छोटा और फिर उसको ऐड कर लें तो हो जाएगा. एक्चुअली ऐसे भी हो जाएगा अगर मैं अपनी उंगली रखूं और फिर उंगली को मेजर कर लूं, तो छोटा करके मेजर कर लेंगे. ओके, ग्रेट. एनीबॉडी एल्स? थिंक अबाउट इट. मेरे हाथ में टेप है. टेप को और कैसे कर सकते हैं? I can cut the tape से measure करके and then measure it with the scale. Absolutely. अगर मैं टेप को यहाँ से काट दूं और इसको सीधा कर दूं तो भी मेजर हो जाएगा. ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा लेकिन आंसर आ जाएगा. परफेक्ट, ग्रेट. Sir, I have an idea. या ग्रेट. बताओ सिद्धांत. We can like take out the tape you can take out the tape one whole round and then you can use the scale to measure it. Brilliant. यहाँ से लेके एक राउंड उठाऊं और उसको स्केल के ऊपर लगा दूं तो स्ट्रेट आ जाए. Brilliant. Great. Good job. So आपको सबको समझ में आ रहा है कि 6-7 तरीके निकल आए? Yes, no? Can you understand that you got at least 6-7 ways of doing it? Yes. Okay. So और ये सोचना कि कितने लोगों ने शुरू में सोचा था. अच्छा, नेहा, मोनिका, do you have another idea? Sushant, Meera wants to speak. या मीरा बताओ. मीरा आवाज नहीं आ रही. I can't hear you. थोड़ा पास आ जाओ स्पीकर के. मीरा, can't hear you at all. Can you hear me now? Oh, brilliant.
I have a plate. I'll measure it by putting the scale ahead. How much it will come? I'll put my finger till end. I'll do it again, and I'll do it with the whole plate. I'll write the point which I'm stopping it, and then add it. Brilliant, great. ओके, सो ये समझ में आ गया कि 4-5 तरीके के निकल आए। आपके दिमाग में जब मैंने पहली बार बोला था कि यार ये राउंड है और ये स्ट्रेट है, हाउ मेनी ऑफ यू थॉट फर्स्ट कि यार ये होगा कैसे? सोचना शुरू करना पड़ा कि यार ये डिफिकल्ट लग रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा। हाउ मेनी ऑफ यू थॉट कि यार ये क्या बता दिया है, ऐसे थोड़ी हो सकता है, राइट? एंड देन बाय द वे इन 5 minutes वी हैव एटलीस्ट 5-6 ways ऑफ डूइंग इट। सो एक छोटा सा क्वेश्चन अभी ना, फ्यू ऑफ यू 3-4 लोग अपना अपना सर्कल मेरे को मेजर करके बता दो कितना उसका मेजरमेंट है। व्हाट इज द एक्चुअल मेजरमेंट? आई नो इट विल नॉट बी वेरी एक्यूरेट, बट क्या आ रहा है? आई विल नोट इट डाउन ऑन अ शीट। सो वो मेरे को बता दो। 3-4 लोग अपना आंसर दे दो। Mine is 11 centimeter. Can you have your name? Inder, okay. Indrajit. Indrajit, 11 centimeter, okay. And जितना accurate हो सके उतना करना इधर, हाँ. 8 centimeter. Sorry? 8 centimeter. 8 centimeter. What's your name? Adhiraj. Adhiraj है 8 centimeter. ये हम circumference बोल रहे हैं ना Adhiraj? We're not talking about diameter, right? Yes, sir. Okay. Anybody else? एक दो लोग और बता दो। Ashwin 23 centimeter. 10.8 centimeter. Ashwin is saying 23. Adhiraj. Sorry? 31 centimeter. वो किसका है? 31 किसका है? Vivan. Okay, 31 centimeter is Vivan. Okay, great. Vivan. Okay, anybody else? Okay, 3-4 लोगों का आ गया। किसी ने बीच में 10.5 भी कुछ ऐसा कुछ बोला था। कौन था वो? I said. You said, and who is this I? Please name. 15.7. 15.7 किसका है? I did it with the thread, yeah. Okay, ठीक है, हाँ, but absolutely जितना accurate होगा वो actually thread से। You said कितना? 15.7. Yeah. Okay, चलो 5 लोगों का आ गया। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, बाकी लोग अपने साथ साथ करते रहो। Tell me the diameter of this. Measure the diameter and tell me the diameter of your circle. Same people. आप अपने बाकी अपने आप कर लो। जय सिद्धांत। 19 fingers. 90? Fingers. नहीं, I get this. So अपने पास लिख लो 19 fingers. लिख लो। You write it. 60 centimeter. Sorry, कितना आ रहा है? 60 centimeter. But मीरा आपका नंबर यहाँ नहीं है, तो आप can you put it with yourself? I'm just looking at Indrajit, diameter कितना है? 3 centimeters. So diameter is basically the highest point pick distance. It's a 3 centimeter. It is. अधिराज कितना है? 5.5 centimeter. ये किसका है? Diameter, sir. नहीं, who's that? Can I have the name? Adhiraj. Adhiraj 5.5. Yes, sir. Please check the circumference. इन दोनों में से एक error है, दोबारा check करो। Sir? Either the circumference or your diameter is not correct. Check again. 19 fingers is 19 centimeters and the diameter is 6 centimeters. Sorry, 6.2 centimeters. Okay, so ये लिख लो अपने पास 19 and 6.2. Okay, great. ये बाकी सब लोग बताओ। Ashwin, how much is it? Siddhant sir, SIDDHAN. सिद्धांत मैं कर रहा हूँ। I'm just asking other people, हाँ? तो सिद्धांत ने बोल दिया, बाकी लोग quick, let's move forward. 4.8 centimeter. Who's that? Gitanjali. Gitanjali, yeah. 4.8 centimeter. Okay, anybody else? ये बाकी कौन? अश्विन और विवान रह गए हैं, जल्दी से बता। 10.2. Sorry? 2.9 centimeter. विवान 10.2. Okay, अश्विन? Okay, great. So ये करने के बाद
एक चीज और करनी है इन्हीं लोगों को. Can you give me the division of this? इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर आ रहा है? So this is the C and this is the D diameter. I want you to tell me what is C divided by D. कितना आ रहा है? Everybody just do that for yourself and for me and be here. Round figure or approximately? नहीं एग्जैक्ट बता दो ना 11 डिवाइड बाय. हाँ अधिराज आपका ये एरर है, इसको जरा चेक कर लो. और अश्विन ने मुझे बताया ही नहीं है. It would be basically the value of pi. Answer, it's 3.6. My request is please don't put any thoughts behind it. Just keep doing the calculation here. हम calculation कर रहे हैं, हम अपनी पुरानी knowledge में नहीं जा रहे. Hang on. Let's be here with the process. हाँ इंद्रजीत क्या नंबर आ रहा है? 3.6 is 3.6. ओके. अधिराज क्या नंबर? अधिराज का कैलकुलेशन गलत है. विमान क्या नंबर आ रहा है? 3.009. Okay. That was Gidan. Who was that? 3.009. Vivan. Okay, got it. Yes, Gidan. 3 point something. नहीं 3 point क्या आ रहा है? Let me 3.2 around. Okay. And what about Siddhant? Sir, कितना आ रहा है? sir, I'm still calculating. Okay. I'm doing the division. 13 divided Great. by Sir, करो ना फिर. Yeah. sir, it's the circumference is 13 centimeter. Circumference is 13 centimeter. 13 centimeter. ये अभी भी Sir, गलत है. I got the answer, sir. Okay, got it. So one thing, can you all see a pattern here? In this sheet, can you see a pattern? sir. What's the pattern? Yes, sir. What's the pattern? It is 6, 1, 2, 6. So at the 6 is coming at the beginning and also at the end. Okay. No. Any When other we pattern? divide circumference with the diameter, we'll always get 3. It's all around 3. Right? अभी accurate नहीं है. Yeah. You haven't been able to measure it accurately. It's approximate, but every answer is around 3. Yes. So there was this guy called Archimedes. He was observing circles about few thousand years back. And why circles? Because circles are very, very, so unko Earth be circular, moon be circular, everything used to be circular. So people were intrigued by circles. So he was playing around with circles. He said every circle he picked up, itna chota, itna bada, utna bada, utna bada, uska circumference divided by diameter was a constant number. If we do this accurately, this constant number will be actually 3.14 and going on and on. He named this number as pi. Pi, sir. This. Pi. Exactly. So if you really look at it now, be very carefully looking at this whole thing. Sir, this pi. One second, hang on. I'm taking you through a process, just hang on with that. Okay? So, oh shit, sorry, just let me share it again. And my request to everybody, just be here looking at it. Okay? So we said C divided by D is equal to pi. So C is equal to pi into D, right? Yeah. Yes, sir. And if you convert D into R, it becomes 2 into pi into D. So which we call the formula R. I'm so sorry. With the couldn't, it's become R. 2 pi. So this is the formula we all learned. But by the way, think about it for a minute. Where is the formula? Every circle in this world has circumference, has a diameter, and if you divide the two, that is a constant. That's how the world is. Where is the formula in this? And we all learned the formula, by the way. Now let's look at this process. My questions to you and my request to you is answer this
in the chat. In the last 15 minutes, 20 minutes, when we were doing this whole exercise, how many of you were actively engaged? Actively engaged means you were doing it, you were thinking about it, you were concentrating, you were completely focused on all your thinking was happening. This was happening. How many of you? Just put it on the chat. Yes. I was there, engaged, involved in the process. Yes, no? Okay. So let me share a quick thing with you and I'll ask the next few questions from here. Is sheet ko dekhte hain. How many? Ingenuity means you were thinking out of the box. Your mind was in a very thinking mode. You were thinking of ideas. You're thinking more. How many of you were doing that? That you were thinking and you were finding new ways. कितने लोग सोच रहे थे? Everyone? Yes, no, Ruchi, Roma, Savitri? Yes, Vishal. Sedulous means that you were not giving up. There were times when answer nahi nikal raha hai. A lot of you couldn't get it. A lot of you took time to get it. How many of you didn't give up? Yaar, answer to hai, mil jayega. The thought of giving up didn't come. Yaar, haan, there has to be a way out. Right? Humane is a lot of compassion, love. जिसको मैं अगर उसका opposite ले जाऊं, how many of you were feeling that अरे मेरा आ गया उसका नहीं आया? How many of you are experiencing competition right now? Stress because of competition. Competition. No stress. Yeah. So there was no emotional or mental pressure to do this. And the way we were communicating, all of you could say it out. Were you able to communicate and chat about whatever happening and how whatever his answers are? Without fearing कि यार अरे मेरा आंसर गलत हो जाएगा, नहीं होगा. Somebody said कि यार मैं इससे कुछ निकाल लूं. Obviously नहीं निकाल सकता, लेकिन आप thinking कर रहे थे और communicate कर रहे थे, right? How many of you experienced that during this entire process of learning? By the way, एक formula जो normally math class के अंदर 2-3 classes लग के हमको रटना पड़ता था और lot of people said मुझे याद भी नहीं है. How many of you know right now that C is equal to 2 pi r का फॉर्मूला आपको कभी भूलेगा नहीं अब, और अगर आप भूल जाओगे तो आप 5 मिनट के अंदर इसको रिकंस्ट्रक्ट कर लोगे अपने लिए. That this whole process is now yours. That you were responsible for your learning. I was only taking you through a process. I was not making you learn the formula at all. How many of you feel that अब formula भी मेरा हो गया है? I can make it myself whenever I want it. Yes? No? Yes. And doing this work, when you do it in a group, you will develop interpersonal relationship versus कि यार मेरा नहीं, उसका नहीं, मेरा नहीं. And the last thing, not the last thing, second last thing, how many of you observed that you were doing some problem solving? I gave you a problem कि यार ये goal है, ये सीधा है, I have to solve a problem. You started observing it, you started thinking about it, you started trying it, and finally you got the answer. How many of you think that you went through this process of problem solving? Everyone? Now my question to you is, how many times are you using these elements? Which are, okay, sorry, one more thing. How many of you think that अगर इस तरीके से मैंने ये चीजें सीखी तो मेरा self confidence बढ़ जाएगा कि मुझे ना, I don't need to be a genius to learn math. By the way, we were doing math and we covered what math, this topic which normally takes 2-3 classes, we covered in 15 minutes. How many of you could feel that this way my self-esteem and my confidence will also go up? अब इस sheet को सारे देखो. Where all, and I'm asking this question to adults, where all in your professional life, your personal life, are you using these skills? And give me, don't say everywhere, give me specific answers. ये सारी skills आप कहाँ use कर रहे हो? Where all are you currently as a homemaker or as a professional or as a teacher or as a businessman or as a businesswoman? Wherever you are, where are you using these 10 elements which I just talked about?
Anybody? Almost everywhere. नहीं बिल्कुल एवरीवेयर नहीं बोलेंगे, स्पेसिफिक बोलेंगे, क्योंकि एवरीवेयर ना आंसर नहीं आता है। कहाँ पे यूज करो, एक जगह बता दो। When I ऑफिस have में तो करते ही to, ऑफिस में। हाँ, कहाँ पे, क्या ऑफिस में क्या करते हो? तो Not कोई giving. नया असाइनमेंट आता है उसमें कैसे? फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ नया आया है, सो आई ब्रिंग माई टीम टुगेदर, वी थिंक ऑफ कि अच्छा क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसको करने की, इस एंड वी थिंक ऑफ द आइडियाज एंड देन वी ट्राई इट आउट इन व्हिच यू नो द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीम। परफेक्ट। एनीबॉडी एल्स? घर पे कहाँ यूज करते हो? हॉलीडेज में यूज करते हो? You use the same in parenting. When You we use the same in parenting. क्या plan a बच्चे trip. क्रेज हो रहा है उसको सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है। ग्रेट। एनीबॉडी एल्स? रिलेशनशिप में कहाँ यूज करो? When we differ on certain things. Exactly. Differences आते हैं तो we do all of that. यार give up नहीं करना है रिलेशनशिप में, we have to make it happen and we try new ways and we keep trying. Okay. So can you see ये जो processes हैं और ये जो मैंने सामने लिखा है, if you and your children become masters at this, you can live a happy, healthy, successful and secure life. कि आप कुछ भी करोगे लाइफ में, yes, these 10 qualities will make you succeed. Yes? Yes. Yeah. And this is the exact purpose of studies. I just took an example of math and I took you through the process. When you do your science, when you do your social sciences, when you do your history, you actually focus on this and the process takes you through that where you acquire knowledge. Obviously हमें करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम्स देने हैं, ठीक है, वो तो है ही है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे. But this way, if you can do your math, which you take 2-3 days to do in 15 days, and in the process you are actually looking at these elements and gaining them. In 14 years, if you do it like this, what do you think your child will become after 14 years? And what do you think children, कि अगर ये वाली qualities मैं masters कर जाऊं, master कर जाऊं इसमें, तो क्या possible हो जाएगा मेरे लिए? These are the life skills, and if you know all these skills, then anything can be possible for you. Exactly. It's not just knowing, it's about mastering them, practicing them. It's not कि यार हाँ ये अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का फॉर्मूला नहीं कर रहे, हम एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. Got it? So a quick और एग्जांपल ले लो. I'll just take 2 minutes because a lot of people say history. So एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ हिस्ट्री का आपसे. ध्यान से सुनना और सारे बच्चों को बताओ. Have you ever heard of भगत सिंह? Heard of him? Yes, sir. So is भगत सिंह का नाम सुना हुआ है सिद्धांत? Okay, great. So ध्यान से सुनना. Is भगत सिंह a martyr? Martyr मतलब देशभक्त और देश के लिए मर गया था. Or is he a terrorist? देश के लिए मरा था, देश के लिए. Okay. Anybody else? देश के लिए मरा था. ध्यान से सोचो. अगर मैं इंग्लिश हूं, if I am from England, what would I say? It's a difference of perspective. Then we will feel like he's a terrorist because he's done a lot of crime. Exactly. But then It's a difference of perspective. It's your perspective. Exactly. So there is no fact in life. लोग कुछ बोलेंगे वो टेररिस्ट है, कुछ लोग बोलेंगे वो ये है. एक्चुअली क्या था? दोनों थे. एक नहीं था. So think about it. अगर आप एडल्ट्स की तरह सोचो अभी, in your life we always have perspectives. हमारे ऑफिस में कम्युनिकेशन में, हमारे बिजनेस पार्टनर्स के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारी वाइफ के साथ, इफ यू लुक एट एवरीवेयर इन योर लाइफ, हमारे सारे झगड़े पर्सपेक्टिव्स की वजह से होते हैं. यस और नो? नाउ इफ यू यूज हिस्ट्री एज अ instrument to become masters at developing perspectives, listening to perspectives, and making that all perspectives in life are right, and I'm able to communicate and understand the perspectives, what is the life skill that your children will get? Acceptance.
They'll be more open-minded. पावर, इसकी पावर समझ सकते हो? एंड अभी हिस्ट्री का मैंने आपको एक रीजन बताया. देयर आर 5 such huge and huger reasons to study and the process to study. And if children do it like that and start building that, what kind of life are we talking about? But अभी हम हिस्ट्री को समझते हैं रट्टे मार लो, एग्जाम में उल्टी कर दो और अगले साल भूल जाओ. और रीजन क्या है? क्योंकि कोर्स में. हाँ, हम जाएंगे अगर कभी ताजमहल में तो बोलेंगे हाँ यार शाहजहां ने बनाया था, ये मुझे पता है. बट सीरियसली शाहजहां ने बनाया या मेरे फादर ने बनाया हो, how does it matter? It's a nice place to go, have fun. So Shant, all these 10 faculties will be developed. Exactly. And think about it, that if children do this every day, 8 hours a day, जो वो जात के करते हैं स्कूल में, और इस तरीके से करें तो मजे आएंगे ना. प्लस ये डेवलप हो जाएगा. So what I'm right now inviting you all, देख मैं ना सिस्टम नहीं चेंज कर सकता, अभी स्कूल में नहीं चेंज कर सकता, बट कैन वी लर्न एज पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन कि यार अगर ये तरीके मैं सीख लेता हूं और मैं 15 मिनट में मैथ घर पे कर लेता हूं, या 15 मिनट में हिस्ट्री घर पे कर लेता हूं, या 15 मिनट में साइंस घर पे कर लेता हूं, तो ये सब खुल जाएगा. और क्योंकि मुझे याद हो जाएगा, मैं एग्जाम्स भी दे दूंगा. I want a couple of, so ना मैं एक्चुअली पायल को बोल रहा था, एक्चुअली वीना इज आउट हियर. बीच में एक और आई थी लेडी, मैं उनको बुलाना चाह रहा था बट हो नहीं पाया. शी वाज हियर, हु वर देयर पार्टिसिपेटिंग इन द लास्ट प्रोग्राम. तो ना मैं अभी एक क्विकली आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ. आई डिड द सेम प्रोग्राम लास्ट वीक एंड पायल वाज हियर एंड आई गॉट अ क्विक रिकॉर्डिंग ऑफ हर कि उसने क्या बोला था. 2-3 बच्चे आए थे उस टाइम पे जो पिछले बैच में थे. आई जस्ट वांट टू क्विकली टेक यू थ्रू देयर what they had said to me. This is Payal, okay? Let's hear her out कि उसने बोला क्या. So yeah, I'll talk about maths. आपको आवाज आ रही है? Could you hear her? Okay, Yes, great. yes. मैं पायल का सुनाता हूँ और एक और हैं बच्चे जो उस दिन आए थे. My soul enemy. Like 9th में मैं. So yeah, I'll talk about maths. My soul enemy. Like 9th में मेरे को maths like सर के ऊपर जाता था. And I actually in the chatting mein, like I saw someone had a question कि पहले से ही बच्चा like it's like buried with the burden of school and school का homework. So like I'm talking from a child's like एक बच्चे के respect से कि I myself was actually very burdened with the homework and school का काम. Like I used to come back home I guess near 4:30 and then I directly used to join this class. एंड ये बोरिंग नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल. लाइक ऐसा नहीं कि स्कूल से आकर पढ़ा 8 घंटे के बाद वापस पढ़ना शुरू कर दिया. इट्स लाइक मजा आता था. लाइक ऐसा लगता ही नहीं था कि यू आर स्टडीइंग समथिंग. लाइक इट्स जस्ट समथिंग जो है वो पढ़ा दिया. नॉट लाइक दैट. लाइक इसमें समझाते हैं. लाइक टेक्निकली पढ़ाते ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. लाइक वी प्ले गेम्स. लाइक बहुत मजा आता है. इसको मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था. Now you won't believe I can sit with maths for 3 hours without getting irritated from it. Like that's a big accomplish for me. क्योंकि मैं पहले maths आधा घंटा भी नहीं बैठ सकती थी. Now I can like I understand क्या पढ़ रही हूँ मैं maths में भी. Like अभी मेरे को alpha and beta आ गया 10th में. So like now I understand that मैं alpha और beta में क्या कर रही हूँ, कैसे करना. So it's actually very easy now. If you ask me if you should join this class or not, I'll say you should. So yeah, I'll talk about maths. My soul enemy. Let me stop. Like 9th में मेरे को maths like सर के ऊपर जाता था. Yeah, so let's get. So yeah, actually, अरे यार बंद कर दूँ. Sorry, वो चले जा रहा है. So this is what is possible. Okay, there's one more kid who was. My name is Manvi. I'm one of the co-founders at Parvarish. We have been supporting and partnering parents, teachers, and children from past 10 years. Sorry. कोई और आवाजें आ गई होंगी आपको मेरी तरफ से. So एक और बच्चा है Taksh. Let's quickly. This another 50 seconds. Let's listen to him. He was again in 9th. Who was 15 years old. I go to Shivnadu school, and I've just finished my 10th board exams, so going to 11th. So I would just like to say this program is like very well, because
after doing this program, the things like SST Hindi, the things I had to like learn, mug up, that became really easier. Like it doesn't like completely go away, but it makes it easier to learn and write in the exams, because if you lose your common sense and writing the exams, marks nahi milte. But this just helps a lot, because when we were doing this program, we added comedy to studies, we added music, we added stories, which made it a lot fun and made it a lot easier to study. So yeah, that's what I would like to say. Hi, I'm Taksh. I'm 15 years old. Sorry. That's so. By the way, it's not just him. Leena, as a parent, is right here. She's actually a teacher. Oh, Rajni, you are there. Sorry. So Rajni, 1 minute. I'll just let. So Rajni actually also taught children. She ran a center for teaching, and she was a part of the last program, and she'll be there in the program again. So quickly, Rajni, if you can take a minute and talk about your experience to others. Just 1 minute. Lovely. Good afternoon, all of you. So happy to be here. So I was a participant for the last program. I've been working with children for around 10 years, and I know firsthand that how stressful children are. So basically, I joined the course to ensure that children have a stress-free learning journey. And I would say I also learned a lot. In the 10 days, it just went like that. I wished we had more classes. And every day, one subject was taken, and we went through a journey on how it has to be learned. So I really wished if somebody had taught me this way in school, I would have been in some other level. And I'm also practicing it with my son. I'm mom of 2 sons, and my elder son is 9-year-old. And I've started teaching him, not teaching him, making him independent with science and maths the way Sushant has given us. And I can definitely see a lot of difference. Now he's starting to understand the subject and enjoying the subject, and he's becoming more experimental and exploring it, I should say. And I'm still learning and growing. So I really wish this generation parents, all of us should go through this journey, because everything has changed from mobile to phone and everything, but still now all the schools are still following the orthodox process. So Sushant has understood what a child can, what will be interesting for a child, and I'm really enjoying this process. Thank you. Thanks, Rajni. By the way, it's not me. Don't just say Sushant. It's about Parvarish, about that's what field development. Yes. But through you, we got the knowledge. So we are doing this in government schools, by the way. I've been intensively working with the Ladakh. There were 30 schools in Ladakh, which are on the border. There are 22 schools in Ulhasnagar. We've been training the teachers on how they can do the same thing in their classrooms versus having a secondary thing. So the idea is that we're looking at great revolution if we can do that. Yeah, it's going to take long time, but yeah, it started. The good thing is that it started, and we want to take it to the schools. So a quick question before anybody else. How was your experience? And I'm asking children and parents. Yeah, just तरीके से हमने भी math किया था. By the way, that was math happening. And how many of you didn't like math? And Monica said, मेरे को math अच्छी नहीं लगती. Smara said, इसको नहीं अच्छी लगती. ये करने के बाद क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि ये math थी और हो गई maths में. क्या लग रहा है? Yeah, so few people, how was that last 20 minutes of experience? I know I just had other people talk about it, but what was your real life experience right now? Yeah, Shivani. Yeah, like we talked about the circumference. I remember the formula for my whole life. Like abhi tak meko bilkul nahi bhulta. But the way you have told me is now a very different perspective. I never thought it this way. कि ये divide करेंगे तो हमेशा 3.14 निकलेगा. तो it's an eye opener for me. And this way, I think the concepts can be made really enjoyable for the kids and for my students as well. Right, and they can remember it for a longer duration of time. So it was an eye opener for me. Very nice. Thank you so much. Shivani is actually a professor in Delhi University College. But I'll tell you what, Shivani, ये purpose नहीं था. My purpose was not to make you learn the formula, because 99.9% people will never use the formula in there. नहीं मैं ये नहीं कह रही थी. मैं ये कह रही थी मुझे फॉर्मूला याद था ऑलरेडी कि 2 पाई आर करना है, और ये क्यों नहीं कर रहा सुशांत. I get it. So मैं ये क्या कह रहा हूँ कि I'm just building on that every formula of mathematics is based on what is happening in the world out there. Absolutely. And how do you observe it, and how do you create, and it's all based on patterns. Yeah.
When you saw that pattern कि अरे 3 के आसपास आ रहा है, that's where your intrigue starts and when you start building it up. Absolutely. So, and this is not what is given by me. By the way, that's way it happened. Okay. But the story is never open to the student. Exactly. So lacking in our education system that we never, tell the story. So rather than learning what Pythagoras did or what Newton did, if we all go through the process of what they did and how they did it, right, that will make me not just understand, actually own it up. So I don't have to learn what Newton did, but I learn and go through the same process of his. I'll own it up and I will learn these 10 elements. Definitely I can do it for my kid, but why don't we do it with the education system? Like, why don't we bring that revolution? I'm just thinking. I am game and I'm said we already started doing it. If anybody has any access, please, I'm more than happy to do it. We'll be happy to train thousands of teachers to do this, because अगर वो स्कूल में कर लें तो हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी. हमारी जरूरत ही ना पड़े ना, मतलब. Children do not have to go through this pain. Absolutely. It's fun. School will be real fun. Right. Okay. Anybody else before I move forward and really tell you कि यार ये ना आज सिर्फ मेरे को दिखाना नहीं था, मैं really want to tell you that how each one of you can become a part of it and make it your own. And I really am interested in making that happen. So anybody, for your thoughts before I introduce you to इसको करेंगे कैसे और आगे कैसे लेके जाएंगे? Anybody wants to share your experience quickly or? Good Shivnadu school. I have just finished my 10th board exam, so going to 11. Sorry. Anybody? Any thought? Everybody has? Anybody has? No? सब चुप हैं, क्या हुआ? नहीं पता करना, नहीं मजा आ रहा, क्या हुआ? What? Everybody's quiet. What happened? And a lot of people actually dropped out. We have 27 people left right now. So getting bored, what happened? Like anybody? What's the space you're in? मेरे को बता तो दो क्या सीन है. और सिर्फ 7-8 लोगों ने वीडियो खोला और बाकी वीडियोस भी बंद हो गए. गीतांजलि, विजया, रुचि, जानिमा, नीचा, सब लोग बंद क्यों कर गए यार? क्या हुआ? What space are you in? Anyone? क्या हो गया? Everybody is quiet. If you're speaking something, then you're on mute. Anyone? So अगर मैं चलो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, पुराने तरीके से करना है जिस तरीके से हम चल रहे हैं, जिस तरीके से हमने पढ़ाई करी है, या we introduce this to our children and shift it from them from today, चाहे बच्चा 5 साल का है या 15 साल का है? We shift. So that's only Shivani. What about others? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? Yes, sir, absolutely. Absolutely right. That's the only way. By the way, impact क्या था यार old ways का? Did we want to study YouTube? मतलब ये सारी list जो आपने लिखी है, we hate math, we hate science, we hate history. Somebody said social sciences. अभी नहीं करना, बाद में करते हैं. It's not fun. No concentration. नींद भी तभी आती है, भूख भी तभी लगती है. It's boring. It's a daunting for the kids. Exactly. And just not that. If you really look at it, कि यार इसकी हम और हमारे बच्चे ना cost क्या पे कर रहे हैं? So एक choice है कि यार let's continue. We went through the drudgery. Let our children go through that drudgery. But एक shift बहुत आया है, and that's a generation shift. Somebody said कि मैंने तो question ही नहीं किया था. मम्मी पापा ने बोला स्कूल चले, पढ़ाई कर ले, मैं पढ़ाई कर ले. This current generation, which your children are going through, are wanting to know why. यार पढ़ा क्यों रहे हो, पहले ये बताओ. और जब उनको समझ में आता है तो फिर उनके पीछे नहीं पढ़ना पड़ता. एंड वी आर टायर्ड. यार वाई कहां से बताएं, हमें नहीं पता. टीचर से पूछते हैं, टीचर्स को नहीं पता. टीचर्स कह रहा है कुछ पढ़ ले, बड़ा आदमी बनेगा, डिग्री मिल जाएगी. अरे भाई डिग्री मिल जाएगी, करना क्या है? यस शिवानी वाज सेइंग समथिंग. सुशांत, एक और शेयरिंग करना चाह रही हूँ मैं हिस्ट्री के लिए. लाइक जब भी हिस्ट्री का एग्जाम होना था तो मुझे एग्जामिनेशन फीवर हो जाता था, प्रॉपर फीवर होता था. मतलब आई नेवर न्यू कि हिस्ट्री हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि एक पर्सपेक्टिव समझने के लिए. एंड नाउ आई एम रियली आफ्टर दिस सेशन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड to talk to my kid so that I can teach her the perspective and nothing is wrong, it's an opportunity which we have missed ourselves, but I don't want to miss it for my kid. This is only one reason. History के ऐसे ना 4 और रीजन है. मतलब I can take you to the process. तो बिल्कुल आपने कहा ना वॉमिट करके, मतलब एग्जैक्टली मैं यही करती थी और मैं हर वक्त बीमार होती थी और हर वक्त बस हिस्ट्री में तो बिल्कुल मीडियोकर की तरह. Children have headaches and stomach aches and fever in front. ना वो भी genuine होता है.
हाँ क्या होता है, वो मजाक और नहीं मुझे होता। आज तक अभी इस सेशन से पहले तक मुझे ये समझ ही नहीं आया कि हिस्ट्री हम पढ़ते क्यों हैं और पढ़ाते क्यों, व्हाई गो इनटू द पास्ट, बट द वे यू हैव ओपनड इट फॉर मी इज रियली अमेजिंग, वेरी नाइस, When you do the history in this group, हाँ it's a topic actually we take it the whole day. It takes 2 hours. I've had time when people who are participating saying, "Sir, आप निकल जाओ, हम continue करेंगे." So 2 hours of history and children still don't want to stop. Sir, I want to share something here. One second. Yeah, Vipul. Can you hear me? Yeah, loud and clear. So my son, he realized this thing in history, and he's writing a book on how to study history and predict the future. Can you see? Wow. नहीं अभी दिख नहीं रहा है, वो hazy आ रहा है, but great, yeah. हाँ जी. Brilliant. So the title of the book is "The Study the Past to Create the Future." brilliant. Brilliant, great. So वो एक और perspective लेके आ जाएगा हमारे लिए. So दूसरी जो है, book name once he writes it and publish it. वो इसके डैड करवा देंगे definitely. Great. So that it will be easy for us to buy and check it what it is. Exactly. So एक ये वाली choice है जो option है, which is we have a huge amount of price which we, our children, and the relationship, and even in money terms we are paying. The amount of money parents are right now spending on tuitions is humongous. And if you really look at it, results improve होते हैं क्या कभी? Never. नहीं होते. No. उसी सब्जेक्ट में जिसके लिए ट्यूशन जाते हैं बच्चे 3 साल के बाद भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं. I experienced it personally myself. I had tuition of maths and accounts in class 12th. And I scored least marks in these 2 subjects, and I scored very well in the subjects I studied myself. Business studies, economics, English, everything was like bang on. And these 2 subjects I just Monica, ये आपके लिए नहीं है, डायरेक्ट के लिए. Yeah. Actually done this research. I spoke to 50 children, got their report card, and saw this कि जिस सब्जेक्ट के लिए वो ट्यूशन में जाते हैं वो सब्जेक्ट में मिनिमम आते हैं. And one more thing here, Sushant, I want to share that, I had a maths tuition for my daughter. She was in 8th, and before that she was studying online tuition. She was happy about it. She was doing it very well. Offline, when the teacher was coming, he was charging quite high and everything. And he was a good teacher. I won't say he wasn't. But, when I shared, took the sharing from Smera that, aapki scores mein koi difference nahi aaya, beta, how things are going on. So what she shared was, shocking for me, that she said, "I'm scared of sir." And that was like, good that you are, and you could figure out कि क्या होता है. You really don't know कि क्या हो रहा होता है. And good question, so that now you can actually make it happen. You can actually take that fear away so that you can get back. But absolutely. This is critical. So ना हम सिर्फ relationship में with studies, relationship with each other, relationship with this, अपना जो दिमाग खराब करते हैं वो तो करते ही हैं. But if you really ask me, we are actually paying out of our pocket for this and still not getting the results in terms of tuitions, in terms of अच्छा तू ये कर लेगा तो तेरे को ये मिल जाएगा, तेरे को ये कर लेंगे ये दिला देंगे. So amount of money we also spend on this is humongous. So the second option which I was trying to tell you was this, like you have this happen. Your child is born with infinite potential. The only reason they are not able to do that is because it's not being taught or not given in the manner which I can understand. मैं अभी बात कर रहा था किसी से, so every human being has a different way of learning. Some learn visually, some learn auditorily, some will learn by reading and writing, and some learn by doing it kinesthetically. But our teaching methodologies in school are primarily reading and writing, and maximum auditory. The other three types of learning do not happen at that extent, and children with those type of learning abilities actually fall back. So purpose मिलेगा, engagement होगा और खुद represent कर पाएंगे is what the choice is. So I'll tell you how we do this. This is a 2.5 month program. We meet once a week for every week. So this is going to start on Thursday, 6th of April.
We will spend from 5 to 7 2 hours, and we'll go through everything. So the first day we will create a purpose of our studies. क्या हम पढ़ते ही क्यों हैं? It as a generic thing. Second, why am I studying? Why are you studying? Why is your child studying and why is your child studying? Like हर एक के लिए अलग होगा. Because somebody wants to become X, somebody wants to become Y, somebody doesn't even know what they want to become. मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ? Purpose क्या है मेरे पढ़ाई करने के लिए? And make it as big so that I want to do it versus मेरे पीछे मत पढ़ो. And I can talk about my own children. I can give you examples कि यार वो जिस तरीके से उनको जब purpose मिल गया था ना, तब उनको कोई नहीं रोक पाया life में. Like my son is a pilot, and to become a pilot you have to do math and science, maths and physics. He took commerce in class 11th, but he wants to become a pilot. So he went to the school, took physics as a 6th subject. I got a call from the school कि यार physics कैसे पढ़ेगा वो, क्योंकि हम स्कूल में तो पढ़ाएंगे नहीं. School में he'll be sitting in commerce classes. He won't be able to sit in the physics classes. Who will teach them? I said, that's his problem. Tuition? I said, sorry. Tuitions is not allowed. That kid did his physics himself of class 11th and 12th. No tutor, no teaching, no school, nothing. And he's a pilot today. So he had to get 55% to qualify. He got 76 in physics to qualify. More than enough. So लोगों को लगता है कि physics 11th 12th की अपने आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो. Because when you get the process, you can. So what we'll do in session 2 to 9 is we will take classes each to do math, to do science, to do history, civics, geography, and languages. And we will first decipher कि अभी हम क्यों पढ़ते हैं और हमारा मूड क्यों नहीं पढ़ने को करता है. And then do a live session where adults, parents participate and take up a topic and do it. And as children, they pick up a topic from what they're studying right now and they do it during the week. So we'll create groups and we'll create some support structure during the week also, so that you practice during the week. Your children practice this way during the week, क्योंकि reality तभी आएगी जब आप खुद try करोगे. सिर्फ session attend करने से कुछ नहीं होने वाला. So the idea is, in these 10 weeks, you know it, you practice it so that you can know yourself and start studying like that. 10th session, we will be talking about कि यार अब ये सीख लिया है, समझ लिया है, अब barriers क्या आ सकते हैं? What kind of barriers will come in my way, and how will I break those barriers so that we can create a structure in the last session so that your children do not need us or any tutor to take them through this. Once they own up the process, it will be easier. And what I highly recommend to parents is you sit with them, because school में ना दूसरी तरीके से पढ़ाई हो रही होगी, बच्चे फिर slip कर जाएंगे. So if you are there, you can tell them कि ऐसे मत करो, ऐसे कर लो, so that you also can support in terms of bringing them back in the process. So that's what we do in these 10 sessions, by the way. Quickly, एक और चीज है, okay? And I am sure